Okay, so we are live. All right. Hi. Hello, everyone. So today we have a new guest with us, and Garima Bajpai, my senior from college. She is here, and we are both star fans of Moon Knight. And so today we are going to talk about Moon Knight as a show, 10 characters, and maybe about the mental health. And disclaimer ki there can be spoilers. So if you haven't watched the series yet, so don't watch the stream as well. But you are welcome to give me watch time. Leave it. So Garima ma'am, hello. Hi दिव्या. हाय कैसे हो? तो मैं ठीक हूँ. तुम कैसी हो? बढ़िया बढ़िया आपको कैसा तो लग रहा है? thank you. Thank you for having me. अरे Like such a moment for me. like it's something new in like Right, a while. right. हाँ 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 Calling me on your channel and all. हाँ Yeah. तो लाइक हम लोग एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं तो शी वाज माय सीनियर एंड तब से हम ऑलवेज वी बॉन्डेड ऑन शोज राइट लाइक आई थिंक गेम ऑफ Right, थ्रोन्स से स्टार्ट हुआ था द सागा right. एंड It लाइक goes इट जस्ट on. कंटिन्यू हाँ Like one thing, like we almost have the same celebrity crushes. So that was one thing which because of which we bonded a lot. हाँ तो हमेशा ऐसे लाइक देयर वाज दिस ट्विटर थ्रेड कि इटर्नल्स और मून नाइट को लाइक हाँ. मर्ज करेंगे तो उस लाइक किसको देखेंगे हम रिचर्ड को देखेंगे रिचर्ड को कि ऑस्कर को. हाँ भाई Such दुविधा for us. हाँ सच में पर पता है मुझे क्या लगा लाइक सॉरी टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा इंटरनल्स बट उसमें ऐसा था ना कि हम्म. वो लास्ट में आपने देखी है ना मूवी मैंने देखी नहीं बट आई नो द स्पॉइलर हमें तो दैट एंड ही में बस वो डाइड. जॉन फिर से जॉन हाँ. स्नो रह जाता और मैं ऐसे थी कि यार गेम ऑफ थ्रोन्स में भी इसी को रखा इंटरनल्स में भी इसी उसका को उसका वही है हर हर में जाके ना मरना. वही वही चलो तो मूव आई मूव बैक टू आवर मेन टॉपिक व्हिच इज मेन मून टॉपिक नाइट राइट. हाँ हाँ तो इट्स अ मार्वल एमसीयू शो तो मतलब हाउ डिड यू लैंड अप ऑन दैट शो लाइक आई विल टेल माय माइंड लेटर लाइक हाउ डिड यू ओके. लाइक हाँ So I landed up like like I like Oscar Isaac तो ऐसे ना हुँ, मतलब I was watching Daredevil after No Way Home came right तो उस टाइम पे ही हुँ, I guess इसका भी ट्रेलर आया था. So like it हुँ, was there was this hype going on that it would be like Daredevil and all these things. So and then हुँ, I was personally interested in it because of Ethan Hawke and Oscar Isaac. So that हुँ, mixture of good like ऐसे टाइप तो ऐसा लगा कि हाँ मतलब कुछ हुँ, इंटरेस्टिंग होगा एंड देयर वाज अ हाइप गोइंग अराउंड उसके लिए इट्स गोइंग टू हुँ, बी अ सीरीज सो तभी हुँ, तभी पता चला दैट्स हाउ आई लैंडेड अपॉन ऑन इट. ओके। हुँ। अच्छा मेरा क्या था हाँ आई तुम थिंक बताओ. आई वाज़ ऑन दैट एक तो मैंने डिज़नी हॉटस्टार चला रही थी, तो आई वाज़ वाचिंग ऑल दीज़ वांडाविजन, लोकी मैंने ट्राई किया बट नहीं हो पाया। तो एकदम से ना मुझे मून नाइट का ट्रेलर आया, वो आता है ना एड, तो आई वाज़ लाइक इसमें हाँ ऑस्कर राइट. आइज़ैक है। तो ना मुझे फॉर ट्राई अस दैट गिव इज इट द अ ट्राई। प्लॉट राइट. तो लाइक आई वाज लाइक आई शुड गिव इट अ ट्राई क्योंकि वो सुंदर इंसान है और इट्स अ सीरीज तो वही. मेरे लाइक लंच हो जाएंगे 5 दिन के ऐसे तो मतलब फिर मैंने स्टार्ट कर दिया तो दैट इज हाउ आई सेम. स्टार्टेड दिस हाँ राइट और उसके बाद दैट्स मैंने व्हाट ना मतलब अगर. हम्म, हाँ बोलो. अरे कुछ नहीं बस उसके बाद मैं फिर हो गया बिंज स्टार्ट देन वी गॉट इन्वेस्टेड अ लॉट राइट लाइक काफी हाँ ज्यादा. हाँ, फिर आई सॉ योर ट्वीट मैंने कहा ये भी देख रही है, मस्त डिस्कस करने को मिल गया। वही. हाँ, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो लाइक अब हम लैंड कर चुके हैं एमसीयू शो पे राइट तो राइट लाइक राइट. अब हम ऐसे एज ए कलेक्टिव उसको जज करते हैं लाइक एपिसोड हम्म. वाइज जज करते हैं ठीक है तो हम पहले हम्म. जाएंगे एपिसोड 1 पे एपिसोड 1 का नाम क्या था डू यू हैव एनी आइडिया
एपिसोड 1 नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे लास्ट के याद है, फर्स्ट तो नहीं याद व्हाट हाँ, वाज द नेम। फिफ्थ एपिसोड का शायद असाइलम था नाम, राइट? असाइलम था, फोर्थ का टूम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी याद नहीं यार, ठीक है, अभी एपिसोड 1। ठीक है, तो हम एपिसोड 1 से स्टार्ट करते हैं। तो लाइक हम अपना जर्नलाइज समरी देते हैं, चलो, कि कैसा लगा हमें राइट। फर्स्ट एपिसोड देख के, एंड फिर लाइक वाज इट लाइक अ गुड हुक और नॉट। ठीक है, तो आप बताओ कि ओके। आपको फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा? फर्स्ट वाज इंट्रीगिंग, लाइक मतलब एज अ पायलट आई फाउंड इट गुड, मतलब जैसे ना स्टार्ट हुआ, एंड वो पूरा सीजन का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, एंड देन देयर वाज दिस, मतलब ना उसको एमनीशिया हो रहा था, एंड आई स्पेशली लव दैट हम्म सॉन्ग मैन विदाउट लव, लाइक वो मेरे स्पॉटिफाई पे भी इस टाइम पे रिपीट में है। तो आई हाँ लाइक हाँ द हाँ वाइब ओवरऑल, मतलब एज अ पायलट आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस इंट्रीगिंग वे टू स्टार्ट, तो फर्स्ट एपिसोड वाज गुड फॉर मी, आई लाइक इट। एंड हम्म। ओवरऑल सब अच्छा था, एंडिंग का भी आई लव्ड इट, लाइक जो एकदम से वो मून नाइट का एक्चुअल एंट्री होता है ना, दैट वाज हाँ, आल्सो वेरी छोटा ऑसम। सा ग्लिम्स देते हैं, हाँ हाँ, वो हाँ। एकदम से एंड में, लाइक व्हेन ही वो जे कॉल आ रहा होता है, एंड ही इज लाइक ओके आई नीड टू, मतलब लाइक आई हम्म कैन सेव अस, राइट, एंड देन वो बैक जाता है कैमरा, एंड देन द कैमरा zooms in, and then हम्म। actually it is Moon Knight beating that Jackal, and so that was good. I like the first episode. हाँ, तो मेरे साथ क्या हुआ था, शायद मेरे भाई ने देख लिया था पहले ही मेरे से ना, मून नाइट Okay. पहले ही देख लिया था। तो उसमें मैं देख रही थी, एंड देन ही वाज लाइक कि वो बांधता है ना चेन अपनी टांगों पे। तो वो ऐसे हाँ। था कि ये ना जब सोता है तो दूसरी जगह पहुंच जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो उसने मुझे ऑलरेडी मतलब हम्म। बता दिया कि कुछ तो है। बट लेटर आई थॉट कि उसको कैसे पता था कि वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, लाइक हाँ। हाउ, लाइक क्योंकि वो तो मतलब उसको तो नहीं पता था। मे बी ही इज अ नाइट वॉकर, आई गेस, देन राइट। हाँ, मतलब आई थिंक वो स्टार्टिंग में उसका वही दिखाया है ना फर्स्ट एपिसोड में, दैट कोई एक ये है, ही इज अ लोनर, एंड ही इज लाइक हम्म काइंड ऑफ मतलब उसको स्लीप इश्यूज है, दैट्स व्हाई वो प्लान करता है दैट वो जो भी था ना कि नॉट टू हम्म फॉल asleep, so he doesn't want to fall asleep, जिसमें कि कल को मतलब कुछ वियर्ड ना हो जाए, राइट, and he thinks that he हम्म। is all dreaming those things, but it was actually it was, he was not हाँ, dreaming, he was हैपनिंग। actually on that mission and all that, yeah. तो वो अच्छा लगा, हाँ। दैट वाज वेरी इंट्रीगिंग, वो मुझे भी वही जो तुमने बोला वो अच्छा था, दैट हाउ दे स्टार्टेड कि स्टीवन इज द मेन थिंग, लाइक हम्म। समवन इज ईटिंग अवे पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ, तो वो अच्छा था। हाँ हाँ। हाँ, तो आई थिंक फर्स्ट में मतलब मैं ऐसे थी कि हाँ, लाइक दिस शो इज गुड, बट देन मतलब अगर मैंने सेकंड नहीं देखा होता ना एकदम से राइट। बाद में, और लास्ट में उसने मून नाइट का सूट ही दिखाया होता, तो मे बी नहीं करती। लाइक हाँ। कंटिन्यू। बट हाँ, मस्त था। तो मतलब इसी के साथ विल मूव ऑन टू द सेकंड एपिसोड। तो फिर सेकंड मतलब हमने एपिसोड। फर्स्ट देख लिया, देन सेकंड, सेकंड में क्या होता है? सेकंड में देन ये वापस आता है ना, एंड ही गेट्स फायर्ड, तो उसको म्यूजियम से निकाल देते हैं, देन ही फाइंड्स आउट मार्क का लॉकर रूम एंड ऑल, तो शायद वो पहली बार खॉन्शू हाँ से मिलता है वहां पे, राइट, हाँ एंड देन हाँ हाँ लेला हाँ। मिलती है सेकंड में, एंड लेला इज लाइक कि हम्म। व्हाई आर यू, हाँ एक चीज तो भूल गई थी, अवॉइडिंग मी। फर्स्ट एपिसोड में वन थिंग व्हिच आई लव्ड वाज हिज एक्सेंट, लाइक व्हेन ऑस्कर आइजैक ओह, स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश इन दैट एक्सेंट। एक्सेंट, so like wow, मतलब like okay, we'll talk about the plot later. Means वो अच्छा था। तो हाँ, तो हाँ सेकेंड हाँ। एपिसोड में देन वही, देन शी इज लाइक व्हाई आर यू स्पीकिंग इन दिस एक्सेंट एंड व्हाट्स हैपनिंग एंड ऑल, एंड फिर वो हम्म उसको किडनैप, हैरो किडनैप कर लेता है, एंड हम्म। फिर देन अगेन देन मिस्टर नाइट कम्स इन, देन मून नाइट कम्स इन, लाइक ही गिव्स द हम्म बॉडी टू मार्क, एंड मून नाइट वो हम्म लास्ट का केस सीक्वेंस टाइप होता है जिसमें अगेन ही इज किलिंग विद हम्म। द कॉल, हाँ and हाँ हाँ then हाँ। he ends up in Egypt. That हाँ, scene. आई थिंक फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड में ऐसा होता है कि स्टीवन इज द वन हु इज लाइक मतलब वी आर थिंकिंग द मेन थिंग, एंड मार्क इज सम Right. अदर पर्सन, ऐसा पर्सपेक्टिव आता है, राइट, शुरू शुरू में। राइट, हाँ, मतलब स्टार्टिंग में हम्म, ऐसे ही लगता है कि लाइक स्टीवन इज द वो एंड लाइक होस्ट, मतलब मेन हाँ। पर्सन, एंड मार्क इज लाइक काइंड ऑफ, he is also saying that, right, that I think हम्म Steven says that you are the reason why I'm not able to date anyone, and you're eating away हम्म parts of my life, so it's like that, so हम्म
it feels Hmm. frustrated for Steven. But yeah, but I knew somewhere कि obviously Mark भी main ही रहेगा क्योंकि he's the Moon Knight, Hmm. right? हाँ So हाँ. what the second episode was okay for me, to be honest. Like Hmm. you know, like first episode से मुझे ज़्यादा like first episode I liked it. Second episode was okay for me. Then it was like कि ठीक है वो Wednesday को देखते हैं वो lunch के Hmm. time पे. It became like that. Like it was okay. हाँ हाँ. तो मुझे तो ऐसा लगा था लाइक फॉर मी सीइंग इट, मैं इतना मार्वल कम देखती हूँ, लाइक मैंने आई एम नॉट वेरी मच Hmm. फैन ऑफ इट. तो मैंने जब पहली Right. बार देखा तो आई थॉट कि लाइक स्टीवन इज द होस्ट एंड मार्क Hmm. हैज सम सुपर पावर एंड ही लिव्स समवेयर Right. एल्स एंड समटाइम्स ही जस्ट गेट इनटू द Comes स्काई in. एंड हाँ डू He's द using लाइक Steven in a way, right? वही लगा था मुझे, लाइक मतलब बिकॉज आवाजें भी आ रही हाँ. होती है ना, ओ नो लाइक द स्टूपिड अ गाय हैज कम नाउ, लाइक ऐसे बोलता है ना उसको टॉन्ट मारते हैं तो Steven तो मुझे Steven लग का एक डायलॉग है ना उसमें like he says that it's an American man living inside of me, something like that. He says that. हाँ भाई, फिर मुझे शुरू में लाइक ऐसे ही लगता है कि लाइक देयर इज सम अनदर गाय सिटिंग समवेयर एल्स, बट लाइक वंस इन अ व्हाइल ही Right. जस्ट होस्ट, like he's the host and he just uses like his powers through him and that's all, like that's the Right. moon knight. हाँ, तो वही. और ऊपर से हाँ. जब कॉन्शू का भी इंट्रोडक्शन होता है ना, लाइक दैट, और मेरे को इतना डरावना लगता है कॉन्शू, लाइक उसके जो ग्लिम्पसेस हाँ. दिखाए हैं, लाइक आई गॉट वो scene स्कैर्ड. was actually horror. Hmm. ओ गॉड, लाइक क्या हो रहा है ये? फिर बाद में पता चलता है कि ही इज लाइक अ फ्रेंड, मतलब ही इज अ लाइक दे नो हाँ, ईच he's a अदर काइंड god. ऑफ थिंग. हाँ हाँ वही. Right. तो मतलब So मजेदार था. then और लैला का तो मुझे शुरू then शुरू में समझ ही नहीं आया, लाइक मुझे व्हेन भी शी नहीं समझा टेल्स था. हिम कि वो उसकी वाइफ है, ऑल दैट, Vibe है. व्हाट्स हैपनिंग. He's like, हाँ. he's also like, you know, like he seems very very nice and all that, you know, but I am not married to you. Who are you? And there's one more वही. element, like we'll talk about it more in episode, maybe when we'll discuss episode 5, then I'll take this. अभी हाँ, बोलने से या. हो रहा है. ठीक है. तो ठीक है, एपिसोड 1 में जाते हैं जिसमें हमें लाइक मून नाइट का ग्लिम्प्स मिलता है. एपिसोड 2 में वो होता है ना द चेजिंग थिंग एंड दे वी गेट टू सी हैरो, आई गेस. हाँ. हाँ And now हाँ. Mark is in control completely, and he goes to Egypt. हाँ. वो last Egypt वाला sequence. हाँ, 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 ठीक है. तो what they are trying to do is they are trying to stop this Harrow person from Right, releasing like another god. हाँ. yeah, so Hmm. basically, उस point पे the Amit is this god, Egyptian god, and she हाँ. has been locked down, and nobody knows where she is, right? Like where she is हाँ. locked down. So they're trying to find that. और वो जो scarab है हाँ. ना, जिसके लिए they are chasing around and all that. So that scarab is like a compass, right? And वो Hmm. scarab को they can reach there, her tomb, Hmm. wherever she is. So वही Hmm. मतलब like starting में that Scarab was with him and Khonshu doesn't want हाँ. her to be released. So like basically Hmm. उसमें यही है कि like you know these two gods like what Khonshu does is he kills bad people and what Amit does हाँ. is वो पहले ही judge करके like even if I'm having a thought कि मतलब you Hmm. know I might हाँ, हाँ, kill हाँ. someone so मुझे पहले Yeah. ही मार देगी. You know, so हाँ, that हाँ. was the main difference between the two. Like that also I liked it कि मतलब दोनों evil में अगर देखो तो दोनों में ज्यादा difference नहीं है. But still it was Hmm. nice what Hmm. they were trying to do. So they are trying to stop Amit को release होने में. That's the main plot. So Yeah. वो Scarab अभी Harrow Hmm. को मिल जाता है तो वो फिर then Khonshu takes him to Egypt. Yeah, yeah, yeah. Now you'll have to stop. Hmm. Yeah, I Right. also like the fact जो like it was funny, but वो वाला fact होता है ना, जब like they were, I think that's episode 3 when they like that Steven summons his that suit. Even second episode only. Yeah, summon the suit. So you summon the soup. What? He's like suit and he gets this proper like formal suit like, Uh, and Laila goes like what's that? what's this? And even Mark says that, and what is this? And you know, you are like, he says something like Psycho Colonel Sanders, or what is this? What are you wearing?
Yeah, like that was like there were funny elements, na, so I They're really funny liked elements, that. But I think right? MC डालने की कोशिश करता है funny, but कभी-कभी ऐसा होता है ना वो funny नहीं लगता, but this वो time was like लैंड हाँ नहीं कर पाता। हाँ 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 हाँ, हाँ वो थोड़ा वियर्ड हो जाता है। एक्चुअली लाइक यू नो हाँ लाइक आई नो एमसीयू हैज अ बिग फैन फॉलोइंग एंड इवन आई वॉच, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका ना हम्म फॉर्मूला सेम होता है, लाइक यू नो दे कॉपी पेस्ट, जैसे आई थिंक हमने पहले भी बात की है दैट बेसिकली ना हम्म लाइक व्हाट एमसीयू डज इज उनके पास अच्छे कैरेक्टर्स हैं, यू नो लाइक दे कैन हम्म एक्सप्लोर दोज कैरेक्टर्स, बट वो उसको ना हम्म सेम फॉर्मूला में रखते हैं, दे डोंट हम्म एक्सप्लोर, मतलब यू नो बस वो बैड और गुड वाला वो ग्रे शेड में लाते ही नहीं है। So so that was like कि हाँ मतलब that is something which was हाँ missing, but this was good. This was like it was a nice. Let's say I was seeing this interview, तो उसमें Oscar Isaac was saying this that you know we tried to हम्म marry these two chain of thoughts, like what he likes in the movie and what MCU formula is. So I think it हम्म worked to हम्म an extent what they did हम्म with this. हम्म। हाँ तो आई थिंक द ग्रे थिंग, पता है पहले मैं भी कंफ्यूज थी लाइक इज दिस गाय गुड एंड इज दिस गाय बैड, क्योंकि वही व्हाट यू सेड ना कि दे आर ऑलवेज पेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट लाइक Black ऑन and ऑफ white. राइट। तो हाँ तो दैट व्हेन यू सेड तो मुझे लगा कि लाइक हाँ मैं भी कंफ्यूज थी लाइक शुरू में लाइक इज दिस अ गुड गाय और इज ही अ बैड This गाय is bad, लाइक yeah. Right. यार हाँ तो वही तो थोड़ा सा यार कंफ्यूजन था। आई थिंक फर्स्ट सेकंड एपिसोड में तो काफी था मुझे लाइक लाइक क्या हो क्या What's रहा है। happening? तो Ah, वही वही तो चलो वील मूव ऑन टू द थर्ड एपिसोड नाउ। third तो थर्ड episode. एपिसोड में क्या होता है, आई थर्ड गेस दे एपिसोड गो टू में ही गोes टू इजिप्ट, इजिप्ट एंड दे ट्राई वहां टू पे हाँ वो आमिद की वो दैट फिगर निकालने की कोशिश करते हैं राइट दैट। नहीं दैट वाज फोर्थ। थर्ड में क्या होता है कि दे गो टू इजिप्ट एंड हम्म इजिप्ट में पहले ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कहाँ पे है, फिर कौन सी वो भगवान वाले उसमें लेके जाता है पिरामिड के अंदर, रिमेम्बर? Oh, they try to bring राइट, other gods they also. tried, हाँ हाँ they try to bring other gods and tell them that what Harrow is planning. So, but the हाँ gods हाँ don't believe Khonshu and they say okay, like we don't believe you or something like that. फिर वो वापस आ हम्म जाता है, फिर उसको लैला मिलती है मार्क को, एंड देन दे गो टू सम प्लेस, वो कुछ तो उनको वो तुम कॉन्स्टलेशन का चाहिए होता पिरामिड है, पे जाते हैं ना। उनको मैप चाहिए होता है, बेसिकली वो कॉन्स्टलेशन का कोई मैप है जो किसी मतलब ऐसे ही किसी टूम वूम में है, तो वो फिर लेला लेकर जाती है, वो मिल जाता है। देन स्टीवन कम्स हाँ बैक, यू नो लाइक दे आर नॉट एबल टू मेक सेंस, वो पूरा नाइट वाला खॉन्सू, हम्म एंड देन खॉन्सू गेट्स imprisoned by the gods, हाँ and the हाँ yeah, this was it. So third episode was only. हाँ 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 पर मुझे आई डोंट नो मतलब मुझे लगा था कि लाइक नाउ वी आर टॉकिंग ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा नहीं लग रहा लाइक exaggerated a bit now like now Ah, we are right, talking right. हाँ Like that's what even I was feeling. You know, like first, second were like first was good, second and हम्म, third. मतलब it felt like you know they're just मतलब उसको बढ़ा रहे हैं, right? मतलब हाँ हाँ not तो moving वही anywhere. But हाँ, but ठीक था. Third was also okay हाँ for me, right? Like, हम्म। अच्छा, ओके, उसको फ़ोन चाहिए था। हाँ, हाँ, तो वही, तो हाँ, आई डोंट थिंक कि थर्ड में इतना कुछ बात करने लायक है, बट हाँ, देयर वाज़ दिस third थिंग was कि okay. उनके बीच में लाइक स्टीवन एंड मार्क के बीच में थोड़ी लड़ाई हो जाती है एंड स्टीवन इज़ लाइक आई वांट हाँ, टू कंट्रोल मोर। हाँ, तो वो हाँ, वाली देन वो चीज़ें काफ़ी ट्रांजिशन अच्छा था जो काफी वायरल भी हुआ था व्हेन ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग का, दैट व्हेन ही से लाइक ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मार्क टू स्टीवन, so that 3-4 सेकंड ब्रिटिश का और क्लिप है। अमेरिकन हाँ, 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 काफ़ी सही हाँ, था कि यार। that was very हाँ, नाइस, यू नो कि अच्छे से was changing into हाँ। that, तो वो था। मुझे याद है आई वाज़ लाइक सून कि बस अब मुझे खत्म करनी है लाइक तब आई थिंक मैंने जब देखा था तो थर्ड 3 एपिसोड्स ही निकले थे। तो मतलब अच्छा, फिर उसके ओके। बाद आई वाज़ लाइक कि अब मेरे को वेट करना पड़ेगा 1 हफ्ता और फिर हाँ, लाइक ओके। बोल रही कि 6 एपिसोड्स का ही सीज़न है। तो मैं सैड हो गई थी। मैं सोची यार अभी हाँ। से शुरू किया। राइट एपिसोड का सीजन पर्सनली मुझे बेकार लगता है, यू नो लाइक हाँ, आई गेस एटलीस्ट 8 एपिसोड होने चाहिए, यू नो टू
and show the content. इसमें भी I think मतलब like once the story goes to episode 5 and all that, तो वो थोड़ा elongate कर सकते थे, मतलब they could have हाँ और अच्छे से, but 6 episode is very वो rush लगता है थोड़ा, like that's what I personally feel. If you are making a season, तो तुम बना लो ना, 8 बना लो. हाँ और ऊपर से छोटे थे यार एपिसोड्स लाइक छोटे भी इन थे, या तो 1-1 घंटे के हो. आउटरो पार्ट वाज लाइक 10 मिनट्स का आई गेस राइट कौन सा? जो आउटरो था लास्ट का मतलब जो वो आते हाँ, हैं राइट क्रेडिट्स राइट आते राइट. हैं हाँ 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 हाँ, वो भी 5-7 मिनट के तो वही होते हैं, तो इफ दे आर शोइंग इट 47 minutes का, तो दैट वुड बी ओनली हम्म 40 or 42 minutes, ऐसा कुछ. हाँ वही 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 तो मैं और मैं लिटरली मैं ऐसे थी कि कहीं मैं पोस्ट वो क्रेडिट्स तो नहीं मिस कर रही तो मैं स्क्रॉल करके देख रही हूँ, कुछ नहीं था नहीं, उसका एक हैक है आई गेस. लाइक व्हाट हैपेंस इज, अगर पोस्ट क्रेडिट होगा ना, तो जैसे हॉटस्टार में खत्म होता है ना एपिसोड, तो वो हम्म, अपने आप आ जाता है नेक्स्ट एपिसोड का, राइट. हाँ अगर वही वो तो आता है हम्म, अगर वो हम्म, आता है तो मतलब नहीं है क्रेडिट. अगर नहीं हाँ आता है तो दैट मीन्स कि कुछ बचा है अभी. नहीं मेरे साथ पता है क्या हुआ सॉरी अगेन हाँ. तो मैं हाँ. वांडा विजन देख रही थी तो वांडा विजन में अच्छा. ऐसा हुआ कि मैंने स्किप कर दिया और पीछे था कुछ मैं सोची, हाँ, दिखा देती तो तो फिर कुछ होगा. मुझको मतलब जैसे 6 episode में मैंने ये देखा था, जब 6 episode आया ना, तो जैसे ही वो खत्म हुआ तो इट डिडंट वो नहीं आया कि कुछ और चालू कर दो या समथिंग. तो हाँ शायद, लेकिन हाँ होता होगा कुछ उनका अपना. कभी हाँ कभी. मेरे साथ वांडा विजन में हुआ ना तो दैट्स व्हाई आई वाज केयरफुल कि मुझे कुछ मिस ओ. नहीं करना क्योंकि फिर समझ नहीं आता आगे कि हुआ अच्छा. क्या तो वही हाँ हम्म. तो अच्छा तो विल मूव ऑन टू फोर्थ फिफ्थ फोर्थ. फोर्थ फिफ्थ साथ में कर लेते हैं ना आई थिंक दैट वाज साथ द में कर लेते असाइलम हैं. पार्ट हाँ ठीक है ठीक राइट है राइट राइट, तो तो हाँ हाँ. तो फोर्थ एपिसोड में ऐसा होता है कि दे गो इनटू दिस पिरामिड एंड दे टेक आउट द अमित का द रॉक फॉर्म लाइक वेयर ही वाज इन हम्म. प्रिजन और समहाउ हैरो समहाउ क्या होना ही था लाइक हैरो वो तो है. फाइंड्स आउट कि उनको मिल गया है एंड एंड दे किल मार्क एंड तो उसके बाद क्या होता है तो मार्क गोस इनटू दिस सिचुएशन वेयर ही इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ राइट और ही इज ऑलरेडी डेड मतलब हाँ, बिल्कुल डेड तो लाइक, हाँ, लाइक फोर्थ हम्म एपिसोड, दैट थिंग व्हिच आई लाइक्ड वाज कि एकदम से वो खुलता है, एंड मतलब जैसे हम्म वो उसको मारा ना, लाइक ही गॉट शॉट, हम्म, एंड आफ्टर दैट हाँ वो पूरा जो ट्रांजिशन असाइलम में खुलता है, दैट वाज लाइक हम्म वाओ, लाइक व्हाट हैपेंड. तो वो अनरिलायबल, जैसे हाँ स्टार्टिंग से भी, और नरेटर इज नॉट रिलायबल, राइट. लाइक यू आर सीइंग इट फ्रॉम द पॉइंट हाँ ऑफ व्यू ऑफ स्टीवन, सो दैट पार्ट वाज इंट्रीगिंग कि भाई हो क्या रहा है, हम्म लाइक लाइक वी वर आल्सो कंफ्यूज्ड एज स्टीवन कि क्या हो रहा है. देन सेकंड और हाँ थर्ड एपिसोड में थोड़ा बहुत पता चला, अच्छा ये नॉर्मल एमसीयू का सुपर हीरो वाला चल रहा है कि इनको मारना है, नहीं, नॉर्मल हीरो वर्सेस विलन. देन इन फोर्थ एपिसोड हम्म, दैट अनरिलायबल पार्ट अगेन केम आउट, लाइक दैट वो ऑन वो, हाँ यू रिमेम्बर द रील आई शेयर्ड जिसमें दे हैव शोन दैट जो वो असाइलम में था, दैट इज व्हाट ही हैज हम्म, इमेजिन्ड. So, like whether he is here, whether he is in this asylum and he's thinking this entire life, or if that, मतलब जो उल्टा वाला चीज है कि एक्चुअली वो मून नाइट है एंड दिस हैपनिंग, so that was very nice कि वो ओपन एंडिंग वाला. नाउ इट्स अप टू अस टू थिंक कि वो एक्चुअल में पागल है एंड इज ओनली इमेजिनिंग ऑल दीज थिंग्स, or हाँ like no, that it's हम्म, actually that ये afterlife वाला. तो वो अच्छा था, that हाँ was अरे nice. मैं तो बहुत कंफ्यूज हुई थी लाइक मतलब मेरा हाँ. कंफ्यूजन लेवल यहाँ था मैं से थी कहीं अपनी पुरानी हुआ लाइफ क्या? और और मैं से थी मैं सच में सोच रही हूँ मैं कहा अच्छा ये कुछ हुआ ही नहीं है ही इज जस्ट पागल एंड लाइक ही इज जस्ट थिंकिंग हाँ, इमेजिनिंग he's just एवरीथिंग thinking, तो मुझे imagining these things. हम्म एंड हम्म उसके बाद फिर फोर्थ, मतलब वहां से चालू हुआ, उसके बाद एकदम से वो स्टीवन भी दिख जाता है, राइट, और फिर एंड में वो टैबरेट आती है हिप्पो. हाँ 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 अरे उसके दैट बाद एंडिंग मुझे वाज होप गुड. मिली हाँ, हाँ, तो उसके हाँ. बाद क्या हुआ आई गॉट सो क्यूरियस कि ये सच में हुआ कि नहीं तो आई ओपन ट्विटर और मैंने डाल दिया हाँ. मून नाइट फिर मेरे को पता चल गया कि कॉमिक्स में देयर इज दिस थर्ड पर्सन जो उसमें फंसा हुआ है सेम. जिसको वो खोलता ही नहीं है हाँ, वही. Even I got to know from Twitter only. Like, मतलब वही कि Jake is also there. So people were very excited about that part. When will Jake हाँ come out? When will Jake come out?
तो वो इनफैक्ट थर्ड एपिसोड में वो एक सीन भी है ना, व्हेन ही वो कोई फाइट में इन्वॉल्व होता है किसी लोगों के साथ, एंड वहां हाँ पे भी हाँ वो ब्लैक्ड आउट हो जाता है, तो देन ऑल्सो पीपल वर सेइंग कि ओ ये जेक है, ये जेक है। हाँ हाँ, तो मुझे तभी पता चला था, लाइक ट्विटर से ही पता चला था कि दिस इज ऑल्सो थर्ड There's another पर्सनालिटी personality, कॉल्ड जेक Walter, लॉकली। हाँ, तो मैं सोचे right? ये लोग कितने आगे हैं, इनको सब पता है। Like, हाँ, आई नो, मतलब वही बहुत होंगे ना हम्म, जो कॉमिक्स के दे आर फैन, तो उनके लिए तो इट वुड हाँ बी वेरी ऑसम दैट सीइंग सच हाँ अ नाइस शो मेड आउट ऑफ इट। हाँ, और मतलब लोगों ने लिटरली ऐसे कॉमिक्स की वो डाली हुई थी, लाइक पिक्चर्स एंड ऑल दैट, लाइक हाउ द ड्रेस इज सिमिलर एंड हाँ आई थिंक इवन कॉन्शू वाज सेम काइंड ऑफ लाइक फ्रॉम द कॉमिक्स एंड मतलब जो हाँ। जैसा कॉमिक्स में था वैसे ही लाइक शो में भी डिपिक्ट किया हुआ है ना। तो वो सब हम्म। भी। हाँ, तो लाइक तो फोर्थ अब आते हैं मेन। कंटिन्यू। हम्म। क्या? हाँ हाँ, वही फोर्थ कंटिन्यू स्टोरी। हाँ हाँ, तो अब हम फिफ्थ पे ही आ जाते हैं, द मेन बॉम्ब ऑफ द वही द सीरीज। मेन बॉम्ब ऑफ द शो। हाँ, तो तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आपसे ही बात की थी ना मैंने कि हाँ मैं देख रही हूँ, तो आई और आई मैं वॉच्ड इट। हाँ मैं अपने ऑफिस के लंच टाइम पे आई यूज टू वॉच, मतलब घर से काम करते हुए, देन आई यूज टू वॉच। हाँ तो आई वॉच हम्म इट ओके उस टाइम पे, एंड हम्म उसके हम्म बाद आई वाज लाइक व्हाट डिड आई जस्ट सी, एंड तू देखती है, लाइक आई नो दैट यू सी राइट, so I pinged you हाँ कि तूने देखा कि नहीं, हम्म। I wanted to discuss. आई नो। So then I remember, then you watched it and then you were like, oh. मेरे ऐसे ऐसे आंसू थे मेरी आंखों I में know it's लाइक। so. I don't cry, पता है, like I watch the show, I like that, बहुत सारी चीजें होती है, but मैं कम रोती हूँ compared to. But even I was like, हम्म okay, what did I just see? That well done. And I actually think this to be a litmus test. जैसे किसी को भी वो show दिखाओ, and that person is हम्म watching that show and उसको fifth episode में रोना नहीं आए, so that means that person don't have any feelings. So, like हम्म very that actually मतलब well up तो होगा, I guess, like nobody would हम्म not. It was very nice. हम्म हम्म। हाँ, आई थिंक द Hmm. मेन थिंग इज जब फिफ्थ एपिसोड लाइक जैसे वो फ्लो कर रहा था ना, तो इट वाज वेरी मतलब शुरू में लाइक दे हैव टू गेट देयर हार्ट्स फुल एंड व्हाटएवर दैट Right. गॉडेस टेल्स देम टू डू आल्सो, तो मतलब वैसा वाला थीम था लाइक कि ठीक है अनदर सुपर हीरो थिंग दे हैव टू सॉल्व समथिंग हाँ. राइट। तो फिर आता है वो वाला पार्ट वेयर दे गो बैक टू देयर हिस्ट्री एंड आई वाज लाइक Right. अरे Memories. स्टीवन की कोई हिस्ट्री क्यों नहीं दिखा रहे, मतलब आई वाज ऐसे थे कि हाँ. मतलब हमेशा मार्क का ही क्यों, मतलब मार्क की क्यों बैगेज लेके चलता है हमेशा। तो ऐसे थे Right. स्टीवन का कुछ क्यों नहीं, क्योंकि ऑल द वाइल मतलब मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम में भी मेरे को लगता है स्टीवन को ही मिला है सीजन लाइक। का ज्यादा है, राइट। हाँ हाँ, जितना भी मतलब जो भी जितना भी स्क्रीन टाइम है सारा स्टीवन को मिला है, तो वी आर मोर अक्वेंटेड टू स्टीवन। तो मतलब उस एपिसोड में हम लाइक कि वेयर इज लाइक स्टीवन का बैगेज लाइक व्हाट द हेल। तो फिर राइट। देन हाँ, फिर जब पता चलता है लाइक द ट्रू रिवील होता है, आई वाज जस्ट लाइक क्राइंग लाइक ऐसे लाइक बकेट्स भर बहुत भर के। बहुत हाँ एक्चुअली वेरी टची, मतलब जो पूरा स्टोरी एंड देन हिज एक्टिंग, लाइक ऑब्वियसली द हाँ स्टोरी एंड द एंटायर राइटिंग एलिमेंट ऑफ जिस तरह से उन्होंने दिखाया भी ना, कि लाइक स्टीवन इज लाइक अस, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मार्क, राइट, एंड लाइक हाँ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, so like Steven is like us only, like जो Steven का रिएक्शन है, that is our reaction on knowing what actually happened with Mark, right? तो वो या चीज लाइक इट वाज वेरी नाइस ऑन दैट, कि किस हम्म तरह से, सो दैट स्टोरी टेलिंग का मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि यू हैव अ नाइस स्टोरी, बट वो इस तरह से दिखाते नहीं है, एंड यू कैन नॉट फील दैट इम्पैक्ट, even that if that हम्म story is very touchy and heart wrenching. But यहाँ पे हम्म like the way they showed is, and how how reluctant Mark was, that he doesn't want anyone to know, he doesn't even want Steven to know what happened, हाँ right? स्टीवन टू नो So या that was really nice हम्म how they showed वो पूरा आफ्टर लाइफ का एलिमेंट हम्म बना के, एंड लाइक एंड या एक चीज मुझे ऐसा लगा, like he got healed by death,
Like, like life couldn't heal him, but it was Oh. actually death which healed him. Like all Yeah, through his life, true. he's like Hmm. living with that, and finally he हाँ, got healed through this. That was या nice. ये वाली बात तो मैंने कभी सोची नहीं, but now it hits me like हाँ. it. हाँ, तो वो लाइक अच्छा था। हाँ मतलब वही मतलब बहुत ही अच्छे एंड थैंक गॉड दे डिडंट डिवाइड द एपिसोड लाइक मतलब ठीक है उन्होंने शुरू हम्म, में किया लाइक एपिसोड 4 में पर वो थोड़ा सा ही दिखाया था लास्ट हिप्पो तक की रही थोड़ा सा। एंड देन फिफ्थ एपिसोड में दे एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो लाइक एक होलसम हाँ, एपिसोड एंड वो भी अच्छा लगा, उसमें कहीं पे भी इंटरप्शन नहीं है, राइट? इट्स ओनली स्टीवन एंड मार्क पूरे एपिसोड में, हम्म राइट? मतलब उसमें कुछ नहीं या दिखाया कि उधर हैरो क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। दैट वुड हैव, मतलब या वो स्टोरी टेलिंग में एक इंटरप्शन आता कि हाँ मतलब हाँ लाइक यू आर सो इमोशनल, उसके हम्म इन्वेस्टमेंट, मतलब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो एंड एकदम से हैरो को हाँ दिखाने लग गए, तो वो ब्रेक नहीं आया। दैट वाज वेरी नाइस। तो जो भी या ब्रेक था, दैट वाज स्टीवन और मार्क के इनर ब्रेक। मतलब एक चीज मैंने पढ़ी थी कहीं हाँ पे, पढ़ी थी या कोई वीडियो देखा था, आई गेस, कि लाइक व्हेन ही, जो वो डॉक्टर हैरो वाला सीन चल रहा है, लाइक वो थेरेपी टाइप का हाँ सेशन उसका, तो हम्म whenever he is like about to be, मतलब कुछ भी ऐसी मेमोरी के पास he is about to go जो वो नहीं जाना चाहता, then he comes back to that, so that is a safe place kind of, हम्म like जैसे जब हम्म when Mark को होता है ना, when they are coming back and Mark is like having a एकदम से वो कि नहीं, I won't go, so then हाँ हाँ एकदम हाँ से वो वापस आ जाता है। And same for हम्म Steven, when Mark tells him that our mom is dead and all, so he is like, हम्म no, let me out, and then he comes back to a Harrow wala हाँ wo. That was nice. ट्रू ट्रू हाँ तो इससे लाइक मतलब हाँ ठीक है अभी हम बाद में बात करते हैं उस बारे में तो सिक्स्थ हाँ, एपिसोड में तो इट्स जस्ट ऑल क्लोजर काइंड ऑफ थिंग so, तो लाइक वो वापस आ जाता है एंड दे डू ब्ला 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 बट आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट होल एपिसोड वाज द एंड where the 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 cutie reveal Jake happened. एक he just सीन है pops उसका, and he just हाँ and he's just वो होता है ना like party में like there's just one वो like person of like वो होता है ना याद रखते हैं oh, लोग I know, मतलब वो होता है ना, सिर्फ पूरा शो हो गया, then cameo एक ऐसा है that that was a हाँ star, एक तरीके से एकदम से हाँ blast करके चला गया, and वही everyone is वही like, oh वही हुआ god, था great. हम्म But even like, हाँ even as a show, you see that when the biggest, like, it comes from a MCU का universe, right? So हर show में कुछ हम्म ना कुछ cameos वो लोग डालते हैं MCU के। हम्म तो यहाँ पे हम्म the biggest cameo was him only. Like everyone was like, okay, Jake आएगा कि नहीं? So I think that was everyone how was you waiting. Like everybody was waiting for him to come. That's all. Like I think from third episode I started seeing these tweets about Jake, 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 Jake. And I didn't even read comics and I knew there's this third personality. And they were so right. worried कि वो Jake को दिखाएंगे भी कि नहीं कि ऐसे हो गए थे वो Where is Jake? Right. हाँ So, but हाँ तो even I फिर liked him, and Jake का हम्म character, हाँ। हम्म वही मतलब मैं वही बोल रही थी कि फिर जब वो आ गया तो एवरीबडी लाइक वाज रिलीव्ड कि थैंक गॉड And Aya be like he's saying that scene was also very awesome. That and him speaking Spanish and वो पूरा attitude, पूरा वो वाला हाँ एकदम boss attitude type. हाँ ट्रू That was ट्रू लाइक awesome. ऑल दैट स्पैनिश थिंगी आई एम लाइक वाओ लाइक वी हैव ब्रिटिश वी हैव That all अमेरिकन was वी हैव that स्पैनिश all was Oscar Isaac. So like in the comics, he's American. Like all three are American only. So ओके him like Jake speaking Spanish, and this all has been improvised by him. कि वो उसको वो ब्रिटिश accent देना and all these. हाँ हाँ Good. सिक्स एपिसोड में मुझे वो ओके भी बहुत अच्छा लगा था, when he comes back for Steven and he's like, okay, that that you are the only superpower I've ever had. That was ओ very nice. हाँ That was was very touching nice. like हाँ 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 उस पे मुझे हाँ, बात like करनी है लाइक normally वी आर डन विद द एपिसोड्स
So like we are done with the episodes, right? So now Right. I surfed internet before this stream, so there were these questions, right? तो उसमें से एक question Okay. was very intriguing. Like उसमें Right. था कि like like as a consumer we think कि Konshu is doing some good to Mark. Like first think ऐसे ही Right. हुआ होगा ना, like first या second episode में कि he gave the superpower to him. But actually Hmm. मतलब when we go through the series we realize कि Konshu is using Mark to satisfy his needs Right. basically, right? And he Hmm. manipulates him and everything. ठीक है, Right. तो उसमें था लाइक मतलब आई वांट योर ओपिनियन. तो उसमें लाइक द पर्सन हु रोट द आर्टिकल ही सेड कि it was like his what do you call it, like मतलब growth, the growth of the character. Like first they show कि जो Steven और Mark हैं, like they're like bound by this concept like God. और फिर बाद में when Right. he says ना you are the only superpower I have, कि they realize कि it's together, like they can like fight Khonshu, and like they are not a weapon Hmm. basically. So they Right. are a human being, है ना? So like what do you Hmm. think about that, their that growth with the Khonshu thingy, like God? Agreed, agreed. Like even I Hmm. agree. Like yes, I agree to Hmm. what you've said. So that's what I liked it. Like like when the show started, so Mark and Hmm. Steven were like अपने अपने में they were अलग अलग. Like Steven was thinking हाँ. that someone is stealing his, and Mark was Hmm. just like like he is a weapon. He's being used as a weapon, and he has to he Yeah, has yeah, to yeah. give his debts, and then he'll just go away like that. So he Hmm. didn't want to Hmm. live. He was already trying to kill हाँ. himself वहाँ पे भी. So, so these हाँ. things were like, so, like there were two different entities and they were fighting, they were bickering, and they were not able to, like Hmm. they were not able to mingle together in a way, right? Coalesce with Hmm. each other, right? तो Hmm. उसमें ना वो चीज अनकॉन्शियस उसी का फायदा उठाया, राइट? वही वो हर जगह यही है हाँ. क्योंकि his brain was Hmm. fractured and he got that. तो उसने उसको Hmm. ऐसे इंसान को लिया क्योंकि he knew that he will do whatever he says. So he kind of made him Yeah, a yeah. slave कि भाई जो Hmm. करना है करो, right? So Hmm. so Hmm. so that growth which happened, right? So what Hmm. the problem was that like Mark and Steven didn't know the truth, right? Mark को पता था, Hmm. but Mark was not facing that, right? And Steven didn't Yeah. even know all these things. तो बेसिकली वही था जैसे होता है ना that you have to accept what's going on within you, that you have to love yourself. तो वो जो सेल्फ Yeah. लव वाला भी वो दिखाया ना that he needed Steven, like वो Hmm. अपना ही सेल्फ लव का जो एक पूरा एलिमेंट है दैट इज वेरी नाइस. सो लाइक ही क्रिएटेड हाँ. स्टीवन से जो ऑल्टर स्टीवन का बना दैट वाज वेरी लाइक दैट वाज बिकॉज ही वांटेड टू save himself. And वो फिर fifth or Hmm. sixth episode में when fifth में he finally accepts, he finally is like okay, like all these things happened and Steven is there. He says that Steven also accepts him. मतलब पहले तो वो भी चिढ़ता था, like they were always fighting. And he's like, no, it was Hmm. not your fault and all this. And then when they come back, when he comes back, वापस Steven के Hmm. पास, and then he says that that it was because of you that I survived. Otherwise, I wouldn't have survived. So instead of Hmm. like seeing DID as something of an illness or of something, Hmm. something which you want to get rid of, like like nahi, you हाँ. are different or you have different alters and all these things. Uski jagah, like showing that no, that embracing that thing, embracing this condition of yours as something Hmm. which makes you more powerful rather than which makes you weaker. तो वो Hmm. Hmm. एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक नॉर्मली दिस इज नॉट शोन. जैसे तुमको क्या दिखाएंगे हाँ. मेंटल इलनेस में कि अच्छा मेंटल इलनेस है वो थेरेपी करो ये करो, बट दिस वाज लाइक एक तो हाँ. स्टीवन को एज अ कैरेक्टर इतना ऑसम दिखाया है दैट एवरीवन गॉट Hmm. इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन हिम. And that Hmm. was like instead of making him disappear, that healing Mark means वो disappear हो जाए, they made it know Hmm. that it's his strength, it's his superpower that will. And then Hmm. when they come back and they're now they are fighting in sync, so that was very nice. Hmm. Now they're always together and वो चीज. हाँ, आई थिंक वो So वाला पार्ट तो बहुत अच्छा था, लाइक व्हेन दे एक्सेप्ट ईच अदर.
and बिल्कुल and they tell Khonshu that they are not his weapon जब last में होता है. Also हाँ I लास्ट में also Leila ने भी judge नहीं किया कभी, like like there's always like वो वाला angle हाँ आ जाता है ना कि like there's this person right, who knows, like, and she didn't even judge, like she also accepted Steven when they kissed, right? So right. like she's like, you are the polite one and Mark is the Honest, opposite of him, right? Yeah, so she didn't have any problem with both of them, and I think she accepted them like both like alike, right? So right, like right. that was the thing which made like मेरे को लैला इसीलिए पसंद आने लगी, like कि she's so ये neutral लैला with. Hmm. हाँ her character is very nice but उसका मुझको ये लगा कि that she is too good to be true, right? Like if you think about it in a more real sense, मतलब reality हाँ, के तभी perspective से, तो like I'm saying so it's कि मतलब hard उसने to accept see कर लिया, someone, like हाँ वही हाँ. what you हम्म. said, that only, that like कि it's very hard to see that someone like मतलब this is what हम्म. I was thinking, that जो normal होता है ना, like what our society has basically, that we हम्म. live in a fractured society, to be honest, and the Yeah. mental हम्म. illness and these things are basically a component of this, like because we live in such a fractured society, like where we don't connect, with, there's so much of hatred and all Yeah. these things, judging, judgmental Yeah. people and हम्म. all this. So I think वो reason है why हम्म. people develop these things. So क्या होता है ना, I'm not talking about Mark, I'm हाँ. talking about in general, उसका तो मतलब बहुत ही traumatic था. But हाँ. like even like people, हम ही लोग हैं या कोई भी है, just talking about very normal scenario. But like एक society हम्म. का एक element होता है which is always judging you if you're doing something differently, हाँ. right? You know that हाँ. always हाँ. talked about this also. That's why we are sensitive about these things. तो वो जो होता है ना, like हम्म. that element which is there, that कि if you are different, you're made to feel that there's something wrong in with you. It's There's nothing हाँ. wrong. Like हाँ. there's हाँ. this quote George Orwell ka कि even if you are in a minority of one, you're not wrong. You're not mad. Like that is this quote. I'm paraphrasing it. तो वो जो चीज होती है ना, बट सोसाइटी विल मेक यू फील दैट वे कि लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, और यू आर डिफरेंट, सो यू आर यू दे मेक यू फील दैट यू आर डिफरेंट, तो तुम डिफरेंट नहीं हो, तुम पागल हो या तुम ऐसे हो, राइट? तो उसमें क्या होता है ना, हाँ. कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंक विद पीपल, like you don't resonate with people anymore, and that is how हाँ. हाँ. these things develop. You either find happiness in your solitude, and then you are accepting हम्म. it. Otherwise, you become a loner, and you are like वही depression में जाना, and all these things are there. So I think जैसे ये हम्म. होता है ना, तो उसमें to find another person. So what I'm trying to say is, जैसे just imagine, like if there is this like uh, एक tram car है that cannot work on a railway line, railway के track पे, and same हाँ. goes हाँ. for the railway line. Yeah. Railway a train cannot work tram car के line पे, but Yeah. दोनों चलेंगे ना, दो दोनों different हैं, but they have their own Yeah. rules, they have their own, but people don't accept हम्म. that. कि it's like कि अच्छा ट्रेन ज्यादा है तो ट्राम कार की वैल्यू ही नहीं है, लाइक दैट. तो उसकी वजह से लाइक हम्म. this हम्म. this is why it's very difficult for sometimes to find. So people wall up, हम्म. जैसे मार्क को भी दिखाया that he walled up, he didn't even tell Leila about anything, because there was always this हम्म. thing that एक हैरो का डायलॉग है जिसमें हैरो says that कि क्या बोलता है वो कि लाइक इफ यू नो द ट्रूथ, वो उसके डैड वाला, so like she will हम्म. see you as unworthy of love, like you see yourself. He's already seeing himself that Ah. so he already हम्म. sees himself that he doesn't deserve love, because वो एक ऐसे हाँ. environment में बड़ा हुआ, उसके बाद भी like हम्म. you're made to feel that way कि that you हम्म. don't belong, like if you're sharing your हम्म. trauma, if you're trying to come out, so हम्म. मतलब अगर वो सामने आके बोलेगा तो people will make fun of him, people will make you call him crazy, और वही ना asylum में डाल देंगे, वैसा वाला चीज, हम्म. instead of helping him. So that हम्म. that that thing, obviously mental illness का how they have showed, I don't think I've seen हम्म. mental illness को इतने अच्छे से depict करना. So that was something very, even personally I liked it.
And I think the Hmm. people who actually like हम लोग तो मतलब कुछ भी नहीं है, but the people who are actually who suffer from Hmm. ADHD, who suffer from all these things, bipolar हाँ, disorder or hmm. DID, तो उनके लिए it would have been so validating that हाँ, you're हाँ, bringing in a superhero who has this hmm. this I won't say it's Yeah, disease, it's this condition, and similar. instead of like and instead of making it sound like something weird, they're making it as a superpower. That was Yeah, very yeah. nice. हम्म। या ट्रू। अरे मुझे तो ऐसा लगता है लाइक द सोसाइटी वाला पार्ट यू से, मुझे ऐसा लगता लाइक नाउ आई थिंक ऑफ इट लाइक, बट आई लाइक टू थिंक इट ऐसे कि लोग सोसाइटी को नॉर्मल क्या लगता है, जो लाइक 80% लोगों के पास जो चीज होती है ना, आई थिंक सोसाइटी Right, उसको नॉर्मल डिक्लेयर कर देती है। एंड देन right. वट एवर लाइक 20% आर डिफरेंट, थोड़ा सा भी दे हैव लाइक वो होता है ना एनॉमली, और हम्म, मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस, थोड़ा तो भी दे कोई डोंट अलग होगा ना। कंसिडर देम नॉर्मल। हाँ, वही। हाँ, वो तो एक आई ह्यूमन, लाइक टू थिंक इट दैट। हम्म। नहीं नहीं को बोलो कंटिन्यू। बोलो। नहीं बस आई वाज सेइंग दैट वो बोलो। ह्यूमन नेचर होता है बेसिकली, दैट हम्म। इफ यू थिंक दैट आई लाइक दिस, तो एवरीवन वुड लाइक दिस, यू नो या and it's okay, हम्म। like there are differences. Abhi, we are like that. So like I'm not हम्म। saying that what you are doing is wrong, right? Like what if या I'm in the 20%, I'm not saying हम्म। that the people who are in the 80% they are wrong, or हम्म। they shouldn't be doing. हम्म। But what I want हम्म। is ki, if I'm in that 20%, let me be in that 20%. Like don't make me feel weird, right? Don't judge me हाँ, on that. So that is लाइक where that हम्म। like yeah, right, like we'll do something, or for example say traveling, if someone doesn't like traveling, so people will हम्म। start judging that person, right? Ki, Arey, why don't you like traveling? I'm just giving a very petty example, right? But it's like that, like I am not हम्म। judging you that why you like traveling, like तुमको क्यों इतना या घूमना पसंद है, I'm not judging you on that, right? And why are you judging me या on this, that okay तुमको घूमना कैसे नहीं पसंद है? So, and it's not intentional also. That is the problem. It's not intentional. Nobody intentionally does that. But वो या बनाए ऐसा है ना कि it's just natural. It's like natural. They'll make you feel like that. But it's not like हाँ, they actually wanted to make you feel like that. So, या but it's a part of our society, right? That's या what I'll have to say. या आई थिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज, you have to accept your goods, and shut like put your noiseless earphones to the people around you sometimes. It actually that's the only way forward. And matlab, like Yeah. this show, like like I've seen, matlab जैसे ना ऐसी movies और mental illness में बनता है, and they are good also. But ऐसे medium पे नहीं बनता है. Like MCU में बनाना is a big thing क्योंकि many people will हाँ, watch it. I think Even those reach, हाँ, people reach. हम्म। reach जा रहा है. तो इनफैक्ट when the episode 5 was telecasted, उसके बाद ना I was seeing on Twitter कि बहुत लोगों ने लिखा था कि like मतलब come out, there was, so maybe that was a temporary thing, I don't know, but even if it was like that's what art should be doing, instead of just cashing on हाँ, money and all these things. At या least या by your medium try to say something, right? तो वो हम्म। बहुत अच्छा लगा मुझे, that they actually मतलब it was very validating for people who actually suffer through, and also for people who don't know that, like they also हाँ, understood that कुछ तो awareness हम्म। हुआ, right? Even if it is like, या I think even 1% या 2% लोग को भी आएगा ना समझ में, so they हाँ, did their job. लाइक So या that was good. Yeah, I That was think good. मतलब I was ranting about it the other day कि आजकल ना movies and series are always like a forced message. Like Right, for me, right. like there's always this forced message. Like कभी ऐसा नहीं होता कि like कुछ चीज fun के लिए बना ली इन्होंने, like मतलब मुझे ऐसा लगा Hmm. आजकल. But हाँ, watching I Moon agree. Knight, like it was just a, I think I just dived into it just for the sake of it, I guess. But I'm thankful कि मैंने वो dive ले ली. Also, इस I वाली चीज agree. का मतलब message जो था, like whatever the message was, like the mental वाला part, for me, the mental was the
कॉलेज, किसी और के लिए कुछ और भी हो सकता है, बट लाइक इतनी Hmm. मूवीज देखने के बाद लाइक आई वाज लाइक दिस वाज द मूवी if I would turn to कि like if I have to tell someone like to how to accept like mental illness and हाँ. like maybe something else, like you can't always try to like make people understand about other situations, like तो कई लोग ऐसे होंगे like Hmm. they are stubborn and everything, ठीक है, तो like if they watch this show maybe they will get like a hint like how these people like go through Right, and what right. it takes to accept themselves and all that. तो वो वाली चीज like I really liked it very much. वो तो हाँ, था. same. That was really nice. हाँ. ओवरऑल तो जैसे मतलब पूरी सीरीज ही अच्छी थी. तो मतलब उसमें था आई थिंक माइथोलॉजी वाला पार्ट भी कुछ ज्यादा ही था इसमें, लाइक हाँ, जिसमें वो आय ऑफ होरस भी समझाते ना. आई नेवर न्यू द मीनिंग उसका, पता है, लाइक आई वाज agreed. सर्चिंग. हाँ, टैटूज देख रही थी एक बार मैं, तो इस बार बताया ना उसमें कि वो टंग होती है, वो आईज होती है, लाइक सिक्स हाँ, वो सेंसेस पूरा. होती है. हाँ, तो वो वाला पार्ट इट वाज वेरी नाइस, लाइक आई थिंक इटर्नल्स में भी इतना नहीं समझाया था उन्होंने जितना हमें इसमें इन्होंने इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में समझा दिया. एक्चुअली तो फन वही था. ना. अब जैसे हम्म, एमसीयू में यही होता है. इवन लाइक उन्होंने नॉर्स माइथोलॉजी भी उठाया, राइट? तो थॉर, हम्म. लोकी और इन ओडिन, इन सब तो का वो कैरेक्टर. मुझे उससे पता था, वाइकिंग्स देखा था ना मैंने, तो इसलिए मुझे वाइकिंग्स में, पता था. हाँ. हाँ, हाँ, बट बट जैसे लोकी बट का, हाँ. जैसे बोलो. आई पर्सनली फेल्ट लोकी का कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज आल्सो गुड. बट ये शो हम्म. से ना दे, मतलब उसका पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट खराब कर दिया. तो ना लाइक उसका पूरा. थॉर रैग्नारॉक में बहुत अच्छा दिखाया था, जो पूरा आई डेवलपमेंट था. नो. पता है और वो मुझे, पूरा तो खराब मेरे कर साथ दिया. क्या हुआ था कि एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे को ना लोकी पहले नहीं पसंद आया था जब एवेंजर्स में था, ही वाज द बैड गाय, राइट? तो आई हाँ, ऑलवेज राइट. पेंटेड एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, एज यू नो. तो क्या हुआ, हाँ. बट वो उसमें आया ना एंड गेम में, वो बचाने आता है, और फिर मैंने कहीं और भी उसका कुछ कुछ देखा था मैंने, तो मेरे को अच्छा लगने लगा था, लाइक लाइक हाँ, इस गाय को लाइक आई फॉलो, मतलब होता ना, बी क्रेजी अबाउट. तो मतलब मैं थोड़ा सा देखी, हाँ ठीक है. बट मैंने लोकी सीरीज देखी और मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा ना तो मुझे ये टाइम वाली चीज पसंद आ रही है, क्योंकि कुछ नहीं समझ आया था, लाइक कुछ भी था मतलब होता है उसमें, पता ना. है? हम्म. वो जो टाइम का एक्सप्लेनेशन दिया है ना, लाइक मतलब एक हाँ. तो ये लोग कुछ भी करते रहते हैं ना टाइमलाइन में, एंड गेम में हाँ. वापस चले गए. तो वो लाइक उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि उसमें कुछ इसलिए नहीं हुआ. आई थिंक, मतलब मुझे याद में गलत भी हो सकती है, वो जितना मुझको समझा, उनका एक्सप्लेनेशन था कि वो ब्रांच आउट हो जाता है और वो कुछ गड़बड़ होगा तो तुमको हम पकड़ते हैं, और अगर सब कुछ नॉर्मल चलेगा तो हम नहीं पकड़ते. आई थिंक दैट लॉजिक इज, तुमको कैसे पता है कि तुमको वो सही होगा कि गलत होगा? एंड लाइक कुछ अरे भी कि हाँ. लाइक मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया वो चीज. एंड ठीक है, स्टार्टिंग मुझे थोड़ी ठीक भी लगी थी वो शो की, बट एंड में वो फिर वो सिल्वी को ले आए. एंड हम्म. वो शो लोकी, एक तो वो लोकी था एवेंजर्स के बाद वाला, राइट? तो ही वाज नॉट हाँ. थॉर रैग्नारॉक के बाद वाला, एंड गेम हम्म. के बाद वाला, जबकि वो अच्छा हम्म. हो चुका है, राइट? तो दैट हम्म. दैट लोकी वाज कंप्लीटली, मतलब वो इनफैक्ट वो हाँ. माइथोलॉजी में भी ट्रिकस्टर और ऐसा ही है, मतलब ना वो बदमाशी हाँ. है टाइप. और हाँ. वो ऐसा बन गया है कि ही इज नॉट लाइक, वो किसी को बिट्रे नहीं कर रहा, एकदम सीधा, अपने अपना ही नाम है उसका शो में. एंड इट्स लाइक उसका जैसे जैसे अभी मून पता नाइट नहीं है क्या ना, तो हो मून नाइट गया, वॉज मून मतलब. नाइट, राइट? हाँ. हाँ, अभी उसमें लैला के ऊपर सब कुछ दिखा देते तो वियर्ड लगता, राइट? तो दैट वॉज लोकी, हाँ. उसमें सिल्वी सब कुछ थी. तो मुझको नहीं पता अच्छा मुझे लगा, समझ लाइक नहीं आया, मतलब वेरी. आई वाज वाचिंग थर्ड थर्ड एपिसोड तक देखा मैंने, कुछ कर ले. मतलब कुछ कर ले. तो इसमें कुछ भी चल रहा था मतलब फिर. ठीक है, तू कुछ कर भी रहा है बैकग्राउंड में, पर नहीं दिख रहा ना, पता चल रहा है राइट. कुछ. और जैसे मून और नाइट में लाइक माय पर्सनल एक्सपीरियंस वाज कि मैंने जब पहले 4 एपिसोड देखे ना, लाइक लाइक हम्म. व्हाट, तुम यू नो दैट आई रीड एंड आई वॉच ऑल दीस थिंग्स अ लॉट, तो मुझे फिक्शन में बहुत पसंद है. तो हम्म. व्हाट आई लाइक, मतलब फिक्शन या कुछ भी है, मूवी या कुछ भी ना, तो इफ दैट मूवी, इफ आई कैन एक्चुअली रिलेट एंड ऐसा लगने लगे कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, तो वो अच्छा लगता है, हाँ. राइट?
और एक मूवीज होती हैं हम्म। दैट यू एंजॉय बट तुम मतलब ऐसे स्क्रीन से देखते हो, बाहर से देखते हो, राइट? तो हाँ हाँ वो हाँ। चीज ना मेरे साथ थी, लाइक पहले 4 एपिसोड ना आई वाज वाचिंग दैट शो बाहर से ही। पहला एपिसोड वाज हम्म गुड बट उसके बाद ना इट वाज अगेन वो एमसीयू वाला ज्यादा लगा कि अच्छा है, ऑस्कर आइजैक है, देख रहे हो, मजा आ रहा है, यू नो, लाइक लाइक दैट, हम्म एंजॉयिंग इट। बट विथ फिफ्थ हम्म। एपिसोड, यू नो, लाइक वो स्टोरी टेलिंग एंड ऑल से आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट, यू नो, मतलब इट टच्ड मी इन दैट वे। तो वो चीज हाँ में एंड उससे अच्छा क्या होता है ना, लाइक इफ यू आर डूइंग दैट वन, वो भी एक भी एपिसोड इस तरह से अच्छा है, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग अ पार्ट ऑफ ऑल दी 4 एपिसोड, यू नो, मतलब या। वो अपने आप इट वर्क्स आउट। कि अब फिर मुझको अभी कोई बोलेगा तो आई लाइक द फर्स्ट एपिसोड ऑल्सो, मतलब यू नो, लाइक देन यू लाइक इट कम्प्लीटली, मतलब तो दैट इज हाँ वेरी लाइक नाइस। अ होल। वो एलिमेंट हम्म पाना, हाँ, जैसे कभी कोई बुक भी पढ़ो ना तो उसमें भी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग इज लाइक ओके, लाइक पहले ऐसा, हम्म। जैसे मेरे साथ ये टू किलो मॉकिंग बर्ड में भी हुआ था कि स्टार्टिंग इट वाज अच्छा। स्लो, मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट यू नो हम्म वंस आई रीच द मिड पार्ट, उसके बाद यू नो लाइक आई फेल्ट इट कम्प्लीटली वो पूरा। हम्म तो हम्म वो भी इम्पोर्टेंट होता है। आई थिंक वही, लाइक यू नो, वो तुम कैरेक्टर्स कितने डीप बना सकते हो एंड हाउ nicely you can, you know, communicate with them. So and हम्म। then his acting, like ओहो। if he doesn't get an इट इज Emmy, I लाइक mean, हाँ सोने पे सुहागा टाइप्स। हाँ, हाँ, सोने पे मतलब सुहागा आई बोलते थिंक हैं ना। हाँ। हाँ, सोने पे सुहागा वो एक्चुअली में, मतलब he actually it was a one man show, मतलब अगर कुछ कमी भी थी ना शो में, like if some हम्म। elements if we start pointing out, ऐसे critique करने लग जाए हाँ तो even that is like, मतलब you won't, मतलब वो ना कि छोड़ो यार उसको कौन देखेगा, right, you know, मतलब the overall acting and the overall story हाँ is so good that you let those things go, कि कितना चलता है, हाँ 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 वो हाँ हाँ अच्छा वो था। तो है। Like it was अच्छी, like all, like it was a wholesome वाली चीज, I guess. Right, Hmm. right. It was very nice. So I'll ask one question. So I read this. So when episode 5 when he breaks down, right, after his mom's death, so you know, like Yeah. there's this debate going on, kind of, that Hmm. why is he crying so badly? Like what happens? You know, like is he crying for his mom? Is he crying for Hmm. himself? So like there are some people who say, you know, that Hmm. it's because he's crying for himself. Like he doesn't care about his mom. Well, it obviously he cares, but you know, like it's not like she's dead. That's why he's crying, or you know, Hmm. he's crying for his mom, like he's feeling sad for her Hmm. being dead. So what do you Hmm. think about it? How do you Like take that? अगर मतलब अगर मैं अपने आप को रखूँ ना उसकी सिचुएशन में, लाइक आई एम थिंकिंग वैसे, तो या Hmm. मैं इसलिए रोऊँगी कि बिकॉज़ आई मिस्ड इट, मतलब Right. आई मिस दैट पार्ट वेयर माय मॉम लव्स मी, और लाइक यू नो, मतलब मेरे को आई डिडंट एक्सपीरियंस इट एट ऑल, ऐसा हो जाता। और उसने किया था एक्सपीरियंस, लाइक आई डोंट नो हाउ ओल्ड ही वाज, लाइक 12 और 13 इश, राइट? Yeah, I guess हाँ। उसका 12th बर्थडे था जब ही that हाँ, हाँ। धूम वाला तो happened. फिर So yeah. हाँ, तो मतलब उसके बाद से एकदम से हर लाइक हिज मदर टर्न्ड अब्यूसिव, राइट? एकदम से Right. शी स्टार्ट्स हेटिंग हिम, मेकिंग हिम फील गिल्टी। तो लाइक उसके बाद मतलब अगर मैं होती और मतलब उसकी जगह होती, तो आई वुड आल्सो क्राई कि मतलब मेरी गलती की वजह से, लाइक maybe I would find myself guilty and I'll cry कि मेरी गलती की वजह से like I never got the love of my mom, तो मैं इसलिए Right. रोऊँगी। हुँ, Right. Right. Even I felt that. वही I think कल मैंने बोला था कि वो जो चीज हुँ, होता है ना, that when you are that small, so you know, you feel that your parents are everything, your parents are not wrong, हाँ, and हुँ, that kind of a thing. And वो हाँ, चीज, then you know, like when a person whom you love, if that person starts abusing you, so that trauma is very very weird. अभी हम लोग के साथ ही होता है, if you love someone, मतलब कोई friend ही है या कोई भी है, हुँ, your boyfriend or हुँ, anyone, and you know, if they हुँ, stop talking to you, मतलब you know, like या, you love them, and if their only fault is that they are not reciprocating, right? तो हुँ, वो हुँ, एक ट्रॉमा हो जाता है, मतलब यू फील बैड कि यू नो, मतलब तुम्हें एक वो एक डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, यू नो, एवरीवन गोज हाँ, थ्रू दैट। यहाँ हुँ, पे तो लाइक द पर्सन, ये जिसको प्यार करे, दैट पर्सन हेट्स हिम लिटरली, सो यू नो, लाइक देयर इज दैट हाँ, गिल्ट व्हिच कम्स इन, दैट इवन दो ही इज नॉट रॉन्ग, बट यू नो वो बचपन से
he's feeling that that it's हाँ, my fault yes, that I took him to that हाँ, case, and everything हम्म, that happened it was because of me. So I think हम्म, I think that is like that's why he broke down. He was obviously sad that his mom is dead, and हाँ, like he blamed somewhere himself that whatever happened हम्म, it was because of me. And वो हम्म, latest latest you know what I noticed was that that was the हम्म, last thing he said before his to mom his mom. became that person. हम्म, So हाँ, like when they are going away, so oh, that was the last thing he said before before his mom turned into what. So that's why he remembers that part. That's why Steven always says latest, 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 latest. glitters. That was nice. Oh, Let's see yeah. अभी Jake का how they'll show. एक चीज है हम्म, मुझको पता नहीं I don't think so I like that but let's see how they show it. जैसे there's a theory or the kind of a thing कि अभी बोला ना वो कि मार्क ने बोला कि लेला के डैड को उसके ये बुशमैन जो कैरेक्टर है दैट्स अ कॉमिक विलन उसमें तो उसने ठीक मारा है. राइट हाँ. बट लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट व्हाट इफ जेक किल्ड एंड ही डिडंट नो लाइक इसको तो ब्लैकआउट होता है राइट एंड ही वाज ऑलरेडी सो लेकिन इंजर्ड लाइक देयर इज दिस थ्योरी कि अभी इसको क्या लग रहा है ना ही लाइक इसको ब्लैकआउट होता है राइट एंड ही वेक्स अप and इसको सब मरे हुए दिखते हैं so what if he had a blackout he woke up and he saw that everyone is dead and but actually it was not Bushman who killed them but it was actually Jake who killed them ये तो so मुझे that अभी भी would लगता be you feel that Jake है. killed हाँ, इसका लैला के dad को मुझे तो लगता है when he says ना कि there is this partner and he got greedy, right तो right right तो मुझे लगता है वो जेक ही होता है. I think Mark believes that Mark को यही लगता है कि उसने नहीं मारा बुशमैन नहीं मारा हाँ. because like he हम्म, got greedy and मतलब and वही जो वो whenever Jake comes in it's when Mark is being physically being abused kind of तो वो जब भी हम्म. आया है ना तो ही इज लाइक हारो उसको मार रहा होता है तभी ट्रिगर्स तो ही वाज ऑलरेडी हाँ. इंजर्ड तो मुझे ऐसा लगता है हम्म. बुशमैन इसको मार रहा होगा उस टाइम पे एकदम से और जेक वुड वो हैव कम आउट हाँ जेक एंड आ जेक ने गया. हाँ. सबको मार दिया एंड देन व्हेन हाँ. मार्क केम आउट तो ही थॉट दैट बुशमैन ने सबको मार दिया एंड ही हाँ. क्योंकि वो सीन में भी बुशमैन को कहीं नहीं दिखाया है नो वन इज देयर राइट बट पता नहीं आई थिंक इट वुड बी वियर्ड ऑल्सो लेट्स सी हाउ दे शो इफ दे शो दैट इट्स जेक हु किल्ड हिम I don't want them to make Jake completely evil types, मतलब I want him to be more complicated like Mark. मतलब जैसे Mark is kind of वो shady area में, right? So I want कि Jake को भी they show that in that shady, but जैसे Klaus की तरह, like He's good, but he's evil to others he's type. good, but he's a monster, right? Kind of that. And ये But Eliza I type. don't know. I'm more interested about how Jake came about to be. Like, Right. जैसे स्टीवन तो का था ना कि वो मतलब ही इज द गुड नेचर ऑफ मार्क लाइक हाँ मतलब वो बेचारा एवरीथिंग होपफुल एंड तो ठीक वही है. मुझको क्या लगता है ना whenever there is a mental trauma that was when हम्म, he came in Steven हाँ. मतलब when he was mentally very very वो ओ जब भी उसको ये भी mentally तो हो सकता है. ये भी तो हो सकता है कि जब याद है आपको लाइक व्हेन ही ट्रांजिशंस तो स्टीवन इज लाइक कि मॉम आ जाएगी जल्दी जल्दी सामान उठा हाँ लो. हाँ ठीक है. हाँ that is it When हाँ he starts the hitting part, maybe it's Jake then. it's Jake that's even I think that like हाँ. Jake is like the physical abuse, whatever happened with him. The हाँ. mental हाँ. abuse था, that is for उसके लिए he has this Steven. alter, हाँ. Steven. हाँ. हाँ. वो mentally trauma उसे, and जो physical है, हाँ. उसके लिए he has Jake. क्योंकि Jake. he But doesn't want to remember his mom hitting his him. heart. So that's why हाँ. there's Jake. So and अभी भी whenever he comes out is when when he is being physically like when he is in हाँ, तभी physically तभी मुझे उसमें याद है. हाँ. तभी आता है वो जब भी When उसको he मार finds पड़ रही himself होती है powerless. I think when he finds powerless himself right powerless. हाँ. वही. हाँ when he is मतलब जैसे हैरो मार रहा था उसको he was almost about to die kind of तो वो आ गया हाँ, but उससे पहले भी हुआ इसमें था एक बार. आई थिंक जब वो लेने जब जाते वो हैं. लड़के लोग थे ना वो इजिप्ट में लड़ाई हो रही हाँ. तभी भी यही हुआ था कि हाँ. तब वो मार रहा हाँ. होता है तो एकदम से उसको हुँ. स्टीवन बोल देता है कि डोंट डू दिस तो उतने में कोई उसको पीछे से मार देता है एंड देन ही हाँ. ब्लैक्स आउट एंड व्हेन ही आउट. कम्स हाँ. बैक एवरीवन इज डेड हाँ, और लैला बोलती है ना कि
कि व्हाट वो तो वाज दैट। व्हाट वाज दैट, वो तो अलग ही था, वो दिखाना चाहिए था मतलब। एंड एक हाँ, ये पर भी था, आपको इवन पता है वो भी कंट्रोवर्सी। डिज्नी नहीं दिखाता है। हाँ, डिज्नी दिखा था। एपिसोड 1 में भी था कि जब एपिसोड 1 में भी ये स्टीवन को मार रहे होते हैं ना, और स्टीवन हम्म ब्लैक्स आउट और एकदम से वापस आता है तो लोग मरे हुए पड़े हैं। तो पीपल वर हम्म लाइक दैट वाज आल्सो जेक, बट लेट्स सी, मतलब हाँ क्योंकि वो भी हाँ वैसा ही था पावरलेस। बट हम्म एक चीज मुझे ये लगी, जैसे स्टीवन का मार्क न्यू कि स्टीवन इज हम्म हिज ऑल्टर, लाइक स्टीवन डिडंट नो, बट मार्क को पता था कि ही क्रिएटेड हिम, वो सब अब्यूज से वो सब करने के लिए, एंड ही हाँ, वाज तो लाइक मुझे दैट लगता है वी हैड इट जेके अंडर से कंट्रोल। अनकॉन्शियस वाला चीज, मतलब। हाँ, बट जेक का उसको पता ही नहीं है दैट जेक एग्जिस्ट, so that would be also very intriguing कि भाई अब जब उन लोगों तो को पता लाइक चलेगा वो। मे बी ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जेक को दोनों के बारे में पता हो सकता है, या तो जेक को पता होगा क्योंकि शायद, हाँ हाँ। स्टीवन इज द गाय जिसको किसी के बारे में नहीं पता, ठीक है। वो तो लेट्स टेक हाँ। स्टीवन हियर, ही डजंट नो अबाउट द अदर टू। मार्क इज इन वन द मिडल बिकॉज ही नोज अबाउट स्टीवन, बट ही डजंट नो अबाउट जेक। एंड मे बी जेक इज द गाय हु नोज both of them. both of them. I think Jake हाँ knows both of them. Khonshu knew हाँ obviously, हम्म तो खॉन्शु को पता कॉन्शु को है तो तो पता ही उसको होगा। तो पता ही है कि जेक है, तो आई थिंक हम्म। जेक को पता होगा, बट लेट्स सी वो जब इनको पता चलेगा तो क्या होगा। हाँ, then it कि goes what in will happen. reverse, then I don't know what will happen. एक I don't know, मीम था ना, maybe. मैंने देखा, तो इट वाज लाइक कि हम्म ऐसी मार्क और स्टीवन मजे में बोल रहे हो कि स्टीवन इज लाइक एक बार ट्राई करो सूट समन करने का, लेट्स सी, और उसने सूट समन किया एंड इट एक्चुअली केम, क्योंकि ही इज राइट, जेक इज हिज अवतार, तो अभी तो वो भी, वो दोनों भी हैं, तो हाँ, तब पता चलेगा ओ शिट ये तो। और ऊपर से मतलब हाँ, लोग ये भी बोल रहे थे कि लाइक देयर वाज दिस अनआंसर्ड क्वेश्चन आल्सो कि जो जेक वाला जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, हाउ हाउ लॉन्ग हैज इट बीन बिटवीन दैट सिचुएशन एंड द दैट सिचुएशन, राइट। like was it like 1 year, did something happen, like वैसा वाला चीज, so will they fit the story the next season in that period, or will they like make it like ahead of that, I don't know, like क्योंकि हैरो हाँ तो चाहिए ना, हाँ हैरो तो एग्जैक्टली, चाहिए। तो तो वही व्हाट बिना विल डू हैरो अभी के तो। कैसे। अभी तो हाँ इसमें एंडिंग भी उन दोनों की तो ऐसी कर दी ना, दे आर लिविंग इन दैट अपार्टमेंट स्टीवन के ही, एंड कुछ मतलब हाँ और कुछ नहीं दिखाया। तो एंड हाँ अभी लेकिन द प्रॉब्लम है सीजन 2 का कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज अवार्ड सीजन में दे हैव गिवन इट एज अ लिमिटेड सीरीज, इफ इट्स अ ओके लिमिटेड सीरीज तो सीजन 2 नहीं आएगा, बट मे बी लाइक आफ्टरवर्ड्स दे विल गिव, या तो कोई, आई वांट इट टू बी मून नाइट ओनली, मतलब मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई जैसे मिडनाइट सन्स वगैरह करके कुछ है, इट्स लाइक लाइक 3-4 सुपर हीरो मिला के दे विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो उसमें ना वो एक दो द वर्स्ट थिंग वुड बी, जैसे मुझे इसमें क्या अच्छा लगा ना, दैट अभी भी देयर इज दिस ओपन क्वेश्चन कि वेदर ही इज इमेजिनिंग एवरीथिंग और वेदर दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, क्योंकि एमसीयू का कोई और नहीं आया, बट अभी एमसीयू का कोई भी हम्म आ जाएगा ना, तो वो हम्म खत्म हो जाएगा, लाइक विल नो। इसमें कभी नहीं, इजिप्ट में भी वो लोग को मार रहे थे तो किसी ने नहीं बोला अरे यार अभी तो थैनोस ने मारा था, अब ये कोई नया आ गया, तो वो चीज किसी ने कुछ मेंशन नहीं हाँ किया, तो थोड़ा बहुत एस्ट्रल प्लेन वगैरह का उसने मेंशन किया था, बट नॉट एनीथिंग वेरी एक्सप्लिसिट जो बता दे, तो वो हम्म अच्छा था। देयर इज दिस थिंग कि अभी भी इसके दिमाग में ही चल रहा है, अगर वो चीज इन्होंने एमसीयू से मिक्स की ना, तो दैट वुड डिसअपियर। हाँ, तब तो सॉलिडिफाई हो जाएगा ना कि ये तो है, ये लाइक। हाँ कि वो पागल, वो मतलब वो असाइलम वाला पार्ट इज नॉट ट्रू, बट वो है ठीक। अभी इट्स एन ओपन, वैसे वी आल्सो नो इट्स नॉट ट्रू असाइलम वाला पार्ट, बट स्टिल लाइक देयर इज दिस ओपन एंडिंग कि हाँ जैसे इंसेप्शन में था कि अभी तक लोग डिस्कस हाँ करते हैं कि व्हाट व्हाट हैपेंड। हाँ, काफी वियर्ड वाला था, मतलब आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट मून नाइट ऑन लेंथ लाइक I क्रेजी। know it's already almost over 1 hour. हाँ, Still, if you think नहीं about it, मतलब there are so many things. एज अ प्लॉट एज वेल एज अ, मतलब मे बी कैरेक्टर्स और मतलब उनके बारे में भी लाइक, मतलब काफी लाइक लॉन्ग बात हो जाएगी ना, क्योंकि जैसे कॉन्शु हाँ, और जब आमित की लड़ाई हो रही थी ना, तो लिटरली आमित सेड कि भाई तू भी तो सेम चीज करता है, इट्स जस्ट दैट कि मैं exactly. पहले ही लाइक तूने डेयरडेविल इट्स देखा जस्ट है? नहीं नहीं
अब डेयरडेविल देखना, इट्स कमिंग अभी ना। मैंने भी नो वे होम के बाद देखा था, मतलब मुझे हम्म पता था बट आई हैव नॉट सीन इट, तो फिर मैंने अभी देखा था। हम्म तो उसमें ना हम्म, लाइक वो जो, मतलब गुड थिंग इज कि जब उसमें जो विलन है ना, विल्सन फिस्क, तो उसका कैरेक्टर इज सो इंट्रीगिंग कि देयर आर पार्ट्स व्हेन व्हेन डेयरडेविल एंड yes, फिस्क आर फाइटिंग। हाँ, व्हेन दे आर हाँ, फाइटिंग ना, तो देयर इज अ पार्ट इन मी, लाइक पार्ट इन द ऑडियंस, दैट विल वांट कि नहीं यार, मतलब फिर मतलब पूरी तरीके से, लाइक दे डोंट वांट डेयरडेविल टू विन, सॉरी टू लूज, एंड दे डोंट वांट कि वो भी दोनों ना हारे, काइंड ऑफ वैसा वाला सिचुएशन। तो वो इज अच्छा, वेरी इंट्रीगिंग, दैट इज व्हाट हम्म मेक्स सो कनेक्टेड, कि उसमें भी हम्म, यही है कि फिस्क और डेयर डेविल है, लाइक एंड पनिशर आता है उसमें सेकंड में, तो इनफैक्ट ओ पनिशर का मैंने ना, फर्नीचर देखा हुआ है। पनिशर देखा है ना, तो पनिशर का हम्म पहला मतलब उसका ओरिजिन होता है वहीं पे, डेयर डेविल के सेकंड सीजन हम्म में कम। तो उसमें हम्म, ये इसका एक डायलॉग है कि यू आर जस्ट वन बैड डे अवे फ्रॉम बीइंग मी, तो दैट वाज वेरी वन नाइस। वन डे That बैक है। one bad day away from being me. That if you have a हाँ, bad day, like Daredevil का no kill rule है. It's like he won't kill anyone. And Punisher तो Punisher है, so you have seen, right? So he's the भाई like badass. So Daredevil is like, I won't kill, but हम्म he is also that devil वाला part तो उसमें है ही, right? वो हम्म, मतलब that सुपर हीरो, क्या मतलब वो बैटमैन टाइप ज्यादा है। तो अच्छा, तो देन ही सेज दैट कि तुम मारते नहीं हो ना, तो उनकी ऐसी बात हो रही होती है। तो उसमें ही सेज दैट कि दैट यू आर जस्ट वन हम्म, बैड डे अवे फ्रॉम बीइंग मी, एंड इट्स एक्चुअली ट्रू, राइट? तो हाँ, ऐसा वाला जब सिचुएशन आता है ना, तो दैट्स वेरी नाइस। एंड इसमें हम्म तो बेस्ट चीज है कि these three people, these three alters, वो आपस में हम्म, ही ऐसे हैं। हाँ, Like Jake is like that, Mark थोड़ा Daredevil type है, Jake is like Punisher, and Steven तो हाँ, Steven है। बिल्कुल ही सेंट लाइक तो सेंट है तो वो तो बढ़िया है। ऐसा होता मत। अरे मेरे को बताना था, पनिशर वाला तो इतना वायलेंट हो गया था। लाइक जो लास्ट एपिसोड है ना फर्स्ट वाले सीजन का, ग्लास वाला जो है वो शीशे वो वाला। उसमें बेन वांस है ना वो, अरे यार हाँ, दैट वाज मैं ऑसम। आपको सच बता रही हूँ, मेरी ना लाइक 1 महीने तक मैं शीशे के पास नहीं जा पा रही थी किसी, लाइक मतलब उसका इतना ट्रॉमा हो गया था इनफैक्ट मुझे। उसके ऐसे पूरा, मतलब लाइक उसकी स्किन लटक रही हाँ, थी टाइप। हाँ, और मैं ऐसी थी, मैंने क्यों देखा? व्हाई डिड आई हैव टू वॉच इट लाइक नहीं नहीं, पनिशर ज्यादा वायलेंट था, आई एग्री। डेयरडेविल बहुत में भी ज़्यादा। है लाइक दिस ब्लड, वो सब है, बट इतना नहीं है, मतलब वो तो मुझे हुँ। भी काफी हो गया था यार, वो लाइक अनिशा तो काफ़ी आई लाइक मतलब नेटफ्लिक्स पे था, मे बी आई डोंट नो। वो नेटफ्लिक्स, मुझे अब दे आर इन अरे डिज्नी, मतलब हाँ, अभी डिज्नी क्योंकि एक्वायर्ड उन्होंने वो देम। काट दिया होगा वो सीन, मे बी आई डोंट नो। बट उस दिन के बाद से आई नहीं वाज़ यार, सो स्कैर्ड ऑफ काटना नहीं चाहिए। ग्लास लाइक ग्लास एज़ अ होल। एक तो शीशे से तो गई थी मैं, दूर ही थी इतनी, और फिर भी मतलब नाइटमेयर्स आ रहे थे honestly। आज के बाद स्किप करूँगी ऐसी चीज़। बट उसमें मतलब वो चीज अच्छी लगी थी ना, लाइक व्हाट ही डिड, मतलब ही सेड कि लाइक पनिशर वाज ऑलरेडी दैट, वो तो बेचारा मतलब ऐसे काइंड ऑफ बन ही चुका था जॉम्बी टाइप का, जस्ट लिविंग फॉर द सेक ऑफ लिविंग। हाँ। उसने उसको इसलिए नहीं मारा बिकॉज ही वाज लाइक वेरी, उसको अपने लुक्स का बहुत वो था, आई एम वेरी अट्रैक्टिव एंड ऑल बहुत दैट। ज़्यादा। तो दैट वाज नाइस कि उसने इस तरीके हुँ। से वो किया। हाँ, तभी करता है वो। चलो तो फिर हम एंड कर देते हैं इसको। हाँ, ओके। हाँ, रुको, एक तो लाइट भी जा रही है ना, और टाइम भी हो रहा। हाँ, काफ़ी बात ठीक है। कर लिया। तो हाँ, तो इट वाज़ सो नाइस हैविंग यू। पूरा कन्वर्सेशन ही बहुत अच्छा था लाइक, तो मेरे को 2 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि वी आर स्ट्रीमिंग, ऐसा लग रहा था बस हम बात कर रहे हैं आपस में। राइट, तो वही, तो मज़ा आया मुझे तो, एंड वील कॉल यू फिर से ऑफ कोर्स। राइट। अ, अरे आई टोल्ड यू ना, सीन्स फ्रॉम अ मैरिज देखो, लाइक दैट, लाइक ऑस्कर आइजैक, लाइक वी लाइक हिम, राइट? लेकिन आई हाँ, आई वाज ओनली ऐसे क्रश टाइप का, देन आई वाज सीन्स फ्रॉम अ हुँ, मैरिज, एंड देन आई वाज लाइक हुँ, ऑब्सेस्ड। उसके बाद मून नाइट आया। फुल हाँ, हाँ, नाउ व्हाट्स दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है। और आपसे मेरे को वो वाली रशियन ऑथर्स वाली भी बात करनी है, लाइक एक हाँ बार हाँ, फुल, बुक।
तो वो उसका तो talk मैं about this. प्रोनाउंस नहीं करूँगी। आई एम अफ्रेड मैं गलत कर दूँगी तो आई विल से रशिमा। Dostoevsky. हाँ, वही It's तो फिर okay, मैं right? उस I don't mind that. मतलब मैं भी ना बहुत गलत प्रोनाउंस करती हूँ और ऑब्वियसली तुम सबको मैं भी जब पहली बार पढ़ोगे तो नहीं समझ में आता and I don't mean to be weird but like the people who make fun of people who pronounce wrong, right? वो I don't like them, like you know, मतलब ठीक है ना, सब हाँ, वर्ड ही तो है, गलत बोल रहे हो तो बोल रहे हो, उसमें कुछ वो थोड़ी है। एंड स्पेशली वही, दीज वर्ड रशियन वर्ड है, वो इंग्लिश भी नहीं है हुँ, पहली बात, तो व्हाई आर यू हाँ, एक्टिंग लाइक बहुत वियर्ड है। हाँ, 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 वही, बट या तो बस वही अंटिल देन बाय, थैंक ट्राई यू फॉर करूँ हैविंग मी, इट वाज रियली नाइस। ऑलवेज़। चलो ओके ठीक है, आई विल एंड।